गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट मो सोनाली स्वागत करुच्ची मो चैनल बायोलॉजी सोनाली रे। तो कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ आम सर्कुलेटरी सिस्टम विषय देखी तो आज आम क्लास 3 देखा जोटी आर्टेरियल सिस्टम आम विषय आम देखा। तो क्लास स्टार्ट करने पूर्व समस्त को अनुरोध अच्छी मो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो पसंद थे लाइक या शेयर कर जो मैंने आज मो क्लास नुआ अच्छा से मु डिस्क्रिप्शन में लिंक देदेवी से जाकि प्रीवियस क्लास गुड़ाक देखिपार। देख आर्टेरियल सिस्टम कौन द आर्टेरीज सप्लाइज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी इन मामल टू लार्ज एओटिक आर्क एराइज डायरेक्टली फ्रॉम द हार्ट। तो बेसिकली आम जो ऑक्सीजन कैरी कर जो ब्लडटा जो बाट देकिना जाए ताको आम आर्टेरीज कही था। तेणु ये आर्टेरीज विषय आम आज पढ़ा। तो प्रथम हूँ पल्मोनारी आर्टेरी। तो पल्मोनारी आर्टेरी कौन इट इज ऑरिजिन इन विजिबल ओनली इन द वेंट्रल व्यू ऑफ द हार्ट इट्स originate anteriorly from the right ventricle and the immediately curved dorso-posteriorly dividing into right and left pulmonary arteries. Each carries venous blood to the lung of its side है। तो बेसिकली एटा आम कौ जगह तार पोजिशन दे दीची जोड़ा हूँ आम एंटेरियरली आम देखा पाई था राइट वेंट्रिकल एंड इमिडिएटली कर्व एवं से इमिडिएटली डोर्सो पोस्टराली कर्व होना बंके हो जाए आ डिवाइड होता है दुई भाग में गोटे हूँ आमर कौन राइट आ गोटे हूँ लेफ्ट पल्मोनारी आर्टेरीज हिसाब से है जी की कौन करे भेनस ब्लड को कैरी करें एवं कोड को नहीं था से लंग्स को नहीं था है इट नियर इट्स bifurcation of the pulmonary aorta is connected with the systemic aorta by the cord of the connective tissue called ligamentum arteriosus, which represent the remnant of the embryonic ductus arteriosus। तापर नेक्स्ट देखिए आम लेफ्ट सिस्टमिक एओर्टा कौन। तो लेफ्ट सिस्टमिक एओर्टा अच्छी इन मामल्स ओनली द लेफ्ट सिस्टमिक एओर्टा originate anteriorly from the left ventricle. It is the main vein which distributed oxygenated blood through its branches to different part of the body। तो बेसिकली तुम जान लो यहाँ हूँ कौन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को से सप्लाई करें कौन बॉडी रो विभिन्न पार्ट को सप्लाई करें। While still within the pericardium, it gives up two small right and left coronary arteries to the wall of the heart। एवं एठू कौन है तुम राइट आउ लेफ्ट दीटा कोरोनारी आर्टेरीज बाहरी। द एओर्टा नाउ कर्व टू द लेफ्ट passing ventral to the trachea and gives up anteriorly two large arteries जोटा innominate and the left subclavian। तब देखो innominate arteries कौन ता विषय में जानिबा। तो देखो इट इज ए शॉर्ट बट स्टॉट arteries which at once divide into three right subclavian right and left common कैरोटिक यही प्रकार तीन भाग में विभक्त होती। तो राइट सबक्लावियन कौन इट रन आउटवर्ड एंड गिव्स अप थ्री मेन ब्रांचेस ट्री लिखा जाए थ्री हम थ्री मेन ब्रांचेस जो वर्टिब्रल टू वर्टिब्रल कॉलम ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड इंटरनल मामारी टू द वेंट्रल थोरासिक वॉल एंड ब्रांचियल टू द राइट फोरलिम्ब। तो यही प्रकार ताको भाग कराई। तापर यदि कॉलम कैरोटिक जदि देखिबा कॉलम कैरोटिड कौन सॉरी कॉमन कैरोटिड कौन the long right and the left common carotid run anteriorly anteriorly run होता है through the neck almost parallel to the trachea अर्थात ट्राचिया सहित ये भी रन होता है अर्थात तार सहित से parallel होगी अच्छी। near the single of the jaw each divide into a external carotid and external part of the head and the internal carotid to the brain and deep part of the head। देखो ये तो तुमको किसी बुझेबार एक्सप्लेन करिबार नहीं केवल तुमको ये टर्म गुड़ाक मन रखिबार अच्छे जे कौ जगार पोजिशन कौन है। समटाइम्स लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी may arise directly from the aortic arch instead of the
इनोमिडनेट है। तो देख जदि आम देखा यहाँ हूँ तार स्ट्रक्चर सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द कौन वर्टिब्रेट्स। तो तुम यही स्ट्रक्चरटा को स्क्रीनशॉट नहीं कर दे पार कि मु तो ऑलरेडी टेलीग्राम रे तुमको मु लिंक दे यार पीडीएफ शेयर कर दी सेठू तुम पाइज। तब जब आम देखा लेफ्ट सबक्लावियन आर्टरी इट ओरिजिनेट इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द एओर्टिक आर्ट its course and the branch are similar to those of right subclavian artery. The heart is simple term in the highly muscular pumping organ. এটা আমি জানিছু heart হচ্ছে highly muscular pumping organ that pump blood into the arteries and suck it back through the vein. অর্থাৎ এটা পম্প করে আর্টারিজ ভিতরକୁ ব্লড ছাড়ি থাকে এবং ভেন্রু কোন কথা ব্লডକୁ সে রিসিভ করে থাকে। ঠিক আছে। ইন vertebrate it has undergo transformation by twisting of the straight tube and the complex multi-chamber organ enclosed in the membranous pericardium. तापर भी आम देखा इंडिविजुअली हार्ट मानकर स्ट्रक्चर विषय आउ टिके जानिबा। प्रथम आम्फिबियन हार्ट देख। तो देख यूरोडेल्स पोजेस इनकम्प्लीट सेप्टम इन द आर्ट्रियम एंड नो सेप्टम इन द वेंट्रिकल है। तो देख ऑल्सो देर इज नो स्पाइराल valve है इन द ट्रंकस है। but urodale have the pulmonary arteries, vein and single set of semilunar valve in the truncus. तो बेसिकली तांको पाखर कौन अच्छी तांको पाखर बेसिकली अच्छी तमर पल्मोनारी आर्टेरीज अच्छी भेन अच्छी सिंगल सेट ऑफ द सेमिलुनार valve एगुड़ा सब अच्छी है। एनुरान जो देखा एनुरान कौन अच्छी हाव द कम्प्लीट सेप्टम तार कम्प्लीट सेप्टम अच्छी इन एट्रियम बट नो सेप्टम इन वेंट्रिकल किंतु वेंट्रिकल कौन प्रकार सेप्टम ना है। इन द इनर लाइनिंग ऑफ द वेंट्रिकल पोजेस स्पंजी ट्रेपुले है। तो यहाँ ट्रेपुला को मन रखी था है स्पंजी ट्रेपुले अच्छी। तब देख ट्रंकस arteriosus display a spiral valve or septum valve which divide its lumen into the dorsal and the ventral channel and also serve to send and the oxygenated blood to the systemic arc and the deoxygenated blood to the pulmonary arteries for carrying its to lung है। तापर जदि आम देखा रेप्टाइल्स विषय। तो देख रेप्टाइल कौन देती देर इज ए कम्प्लीट सेप्टम इन द एट्रियम एंड द इनकम्प्लीट इन द वेंट्रिकल है। यार मध्य देख कम्प्लीट सेप्टम अच्छी एट्रियम रे बट इनकम्प्लीट अच्छी वेंट्रिकल रे विथ ए फोरामेन पानिजा फोरामेन पानिजा अच्छे आम प्रिवियसली पढ़ी है। थ्रू which two kind of the blood mix before it is pumped to the body organ. Also ventral aorta in the reptile divide into two so that right systemic arc emerge from the left ventricle and the left one emerge from the right ventricle. देखिए तो ये प्रकार तांकर सिस्टम अच्छी। at the point of their crossing a foramen of panija allow the blood to the flow from one arc to the another है। तो देखो एसे जोड़ा अच्छी एसे नोड कौन करे एसे नोड इन द रेप्टाइल्स माइग्रेट नियर द जंक्शन ऑफ द साइनस वेनोसस विथ एट्रियम एंड द फोरमेन इज द रिड्यूस इन द साइज इन द क्रोकोडाइल। अच्छा ए क्रोकोडाइल विषय में देखा इन क्रोकोडाइल द बोथ एट्रियम एंड वेंट्रिकल आर completely partitioned so that there is no mixing of the blood in the heart but two systemic arcs still have the foramen panija connecting them and hence blood mix rendering crocodile the status of the cold blooded animal. तो रेप्टाइल्स मान भर आम जानी क्रोकोडाइल चारिटा चेम्बर हार्ट अच्छी बाकी मान 3 चेम्बर हार्ट अच्छे आम जानी है। तापर जब आम देखा एवियन हार्ट देखा तो देख देख बार्ड्स आर द कौन endothermic animals so with which a
complete separation of the oxygenated and deoxygenated blood is necessary. So there is a complete partition in the atrium as well as ventricle and left systemic arc disappear, allowing only oxygenated blood to the pumping to the head region and the rest of the body organ. तो ସେଇଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କ ଚାରିଟା ପାର୍ଟିସନ୍ ବା ଚାରିଟା ମାନେ ଚେମ୍बर ଅଛି। ଏମାନଙ୍କ ଯେଉଁଟା ଆଟ୍ରିୟମ୍ ଅଛି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଡିଭାଇଡ୍ ହେଇଛି, ଭେଣ୍ଟ୍ରିକଲ୍ ବି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଡିଭାଇଡ୍ ହେଇଛି। In birds, there is a single valve between the right atrium and ventricle. Sinus venosus has disappeared in the bird. तापर देखिए मामाल विषय देखिबा। तो मामाल देख देइछि मामाल also have the 4 chamber. एटा हम जानिछु 4 chamber heart and only one systemic arc on the left side allow the mixing of the blood, whereas anywhere there is no sinus venosus in both bird and mammals. तो bird रो भी नहीं कि mammal रो भी नहीं, टोटली एमान कहारी साइनस भेनसस नहीं, किंतु एमान को चारिटा हार्ट आम चारिटा चेम्बर अच्छे आम जानिछु हैला। एंड पल्मोनारी भेन डायरेक्टली एंटर टू द राइट एट्रियम। द एसे नोड इज ऑल्सो कौन हाउस इन द एट्रियम रे एसे नोड मध्य थाए हैला। तो एटा टिके देखो स्क्रीनशॉट यार जो मुझे फोटो नेली टिके एटा झापसा आसी जाइए, तेणु मुझे जहाँ कहूँ तुम मैंने शुणिकी नोट बनई दियो, ठीक अच्छे। तापर देखिए देखा आम लेफ्ट सब क्लाभियन आर्टेरीज उपरे। तो यहाँ हूँ इट ओरिजिनेट इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द एओर्टिक आर्क, इट्स कोर्स ऑफ ब्रांचेस एंड सिमिलर टू दोज ऑफ राइट सब क्लाभियन arteries. The heart is simple term in the highly muscular pumping organ that pump blood into the arteries and suck it back through the vein है। ताले आमे प्रथमे आमे आम्फिबियन हार्ट विषय देखिबा। तो एठी मध्ये आम्फिबियन देखो प्रथमे आमे देखिबा देखो यूरोडेल पोजेस इनकम्प्लीट सेप्टम इन द एट्रियम एंड नो सेप्टम इन द ventricle. Also there is no spiral valve in the truncus, but urodale have the pulmonary arteries and vein and single set of the semilunar valve in the truncus. से एका जिनस है। तापर जदि आमे देखिबा एटा तबे देखिदेबो से एका जिनसटा सेटा से रिपीट करिछि। तापर देखो जदि आमे देखिबा रेप्टिलियन हार्ट को देखिबा, देयर इज कंप्लीट सेप्टम इन द एट्रियम एंड इनकम्प्लीट इन वेंट्रिकल है विथ ए फोरामेन पानेजा थ्रू व्हिच टू काइंड ऑफ द ब्लड मिक्स है, जोटी दुईटा प्रकार ब्लड ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन होता है मिक्सिंग अफ होता है बिफोर इट पम्प टू द बॉडी ऑर्गन। सो वेंट्रल एओर्टाइज इन reptiles divide into two so that the right systemic arc emerge from the left ventricle and the left one emerge from the right ventricle है। तो से एका जिनस। तापर देखो एभियन मध्य से देइछि एभियन आउ मामाल से एका जिनस देइछि है। तो तापर आमे नेक्स्ट देखिबा जदि एई स्ट्रक्चरटा को। तो ये देखो ये देखो से सेम जिनस देइछि, एटा होछि तमरो कौन माने सेटा झापसा होता है। ये देखो तुम क्लीयरली विजिबल अच्छी। तो ये तुम नोट बनई दियो है। तापर देखो यहाँ हूँ तार स्ट्रक्चर फिश केमती आम्फिबियन केमती अच्छी, यहाँ को तुम स्क्रीनशॉट नहीं जाओ। तापर ये देखो यहाँ रेप्टाइल्स और मामाल है, ये सब स्क्रीनशॉट नहीं जीवो, ठीक अच्छे। ये सब स्क्रीनशॉट नहीं जीवो लिखिदेव। अच्छा नेक्स्ट क्लास रे आमे कौन पढ़ा यहाँ एओर्टिक आर्क रू मुझे तुमको पढ़ेबी आज तो ये। नेक्स्ट क्लास ना एओर्टिक आर्कटा सारीदेवा। चलो एओर्टिक आर्कटा अल्प अच्छे, एओर्टिक आर्कटा सारीदेवा। देखो एओर्टिक आर्क कौन होची are the pair of the blood vessels that emerge from the ventricle of the heart. Aortic arc carry blood from the dorsal blood vessel to the ventral blood vessel है। The number of the aortic arc is different in the different adult vertebrate है, different type रो अच्छी, but they are built on the same functional plan, same function अच्छी। In ancestral vertebrate the number of aortic arc
was high and variable. देखो ostracoderm जब देखिबा had 10 pair of the aortic arc. In all vertebrates aortic arc are bilaterally symmetrical, but in एमनियोट जदि देखा एमनियोट मानकर हूँ आसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर देखा जाए है। तापर देखा आम जदि आम्फिओक्सस देखा देर आर 60 पेयर ऑफ एओर्टिक आर्क अच्छी लाम्प्रेर 8 पेयर अच्छी है। एंड जदि हक फिश द नंबर ऑफ एओर्टिक आर्क हूँ 15 पेयर है। जॉड वर्टिब्रेट जो देखा देर आर 6 पेयर अच्छी एओर्टिक आर्क है आम जानलु है। एंड आउ कौन देखा फाउंड इन द एम्ब्रियो ऑफ द ऑल वर्टिब्रेट आ बाकी जी एम्ब्रियो अच्छी वर्टिब्रेट्स समस्त से 6 पेयर ही देखा मिलता है। द फास्ट एओर्टिक आर्क इज कॉल्ड मांडिबुलर एओर्टिक आर्क। एटा बहुत इंपोर्टेंट। फास्ट एओर्टिक आर्क को मांडिबुलर एओर्टिक आर्क कहा जाए। एंड द सेकेंड इज कॉल्ड हायर्ड आर्क एंड द रिमेनिंग इज कॉल्ड द थर्ड 4 5 6 एओर्टिक आर्क। तो यही प्रकार ना दिखाई है। There is progressive decrease in the number of aortic arc in the vertebrate group during evolution. तो जिते इवोल्यूशन है से aortic arc कौन है धीरे धीरे संख्या कमिबा को लगिला है। The difference of the number of the aortic arc is due to the कौन complexity of the कौन blood circulation in the mode of living from the aquatic to terrestrial respiration. जेहेतु aquatic रू terrestrial respiration को से आसिला ब्लड जो सर्कुलेशन सिस्टम चेंज है तेणु एमानकर एओर्टिक आर्क संख्यार परिवर्तन आसिला है। ड्यू टू चेंज इन द मोड ऑफ रेस्पिरेशन सर्टेन आर्क हैव बीन completely lost and other have undergo modification. The change to the heart were accompanied by change to the aortic arc. Thus to the rest of the circulatory system the dorsal aorta is continuous vessel in the embryo bend from the series and the aortic arc. तो देखो फास्ट बैंड होची फास्ट एओर्टिक आर्क। तो फास्ट बैंड को आमे फास्ट एओर्टिक आर्क बोली कहिले। When pharyngeal arc develop cross link and are formed between the dorsal and the ventral aorta, one of each pharyngeal arc. Almost all vertebrate embryo exist 6 aortic arc जोटा मैं previously कहले है। तब the ancestral condition जदि देखिबा may have more से मान को अधिक aortic arc थिला evolution है कि धीरे धीरे कमिला। In gill breathing fishes the aortic arc are retained and provide afferent branchial arteries to the gill arc. तब देखो यदि एडल्ट वर्टिब्रेट देखिबा that lack of gill the embryonic and the ancestral pattern 6 aortic arc is highly modified which develop. The most extreme modification occurs in birds and mammals. सबुठु modification कोठी छि birds और mammal काने एमान सबुठु evolution सबुठु लास्ट आडे bird और mammal अछि. But the beginning of these changes can be seen in fishes. तो fish रो धीरे धीरे चेंज हेबा को लागला काना fish होछि फास्ट फॉर्म रे अछि आमे जानिचो vertebrate रो हैला. These modification revolve around change from gill to long respiration and evolution of the double circulation system. तो ई प्रकार धीरे धीरे चेंज आसी. वर्तमान ठू आमे कोन करिबा कंपैरिजन आमे देखिबा. तो नेक्स्ट क्लास रे मु तुमको कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ एओर्टिक आर्क विषय कहबी हैला. तो आम जानिबा सेठी सब जति कंपैरिजन अछि सब कंपैरिजन को थोर थोर देखि देबा हैला. तो एति आउरी अछि. तो आज पाई तो एति नेक्स्ट क्लास रे अधिक पढिबा. थैंक यू.